8:33. Just one more minute. We will start. All right. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. This is Kaleem Syed from Clanwin, and 8:33 is the time which is said that we will start. 3 minutes of delay because of few people who are joining. It is 23rd of November 2023, and we are going to talk about on a topic called Ikigai in a perspective of Islam. A small disclaimer before I start this session. Let me tell you that I am not an Islamic scholar. So all what I say is just my perspective. Something may, if it goes against your thoughts, your belief, okay, I do apologize for that. I'm not an Islamic scholar. This is what, while studying, I have realized. So, Ikigai, and in an Islamic perspective. Thankful Thursday from Clanwin. Right. So today we are going to talk about the topic which I said, what Ikigai means and what it has impact in our life and what is the Islamic perspective. The two editions, this is the first edition, this is the first episode which we are going to have it today, and the second episode will be on the next Thursday. So without any further ado, let us start what Ikigai means. This session especially, we are not making interactive. However, if you have got any questions, please do let me know by the end of this session, or if you think that your question is very important, you can put it on a chat box, or else we'll keep it at the last. So what I think those who have joined, they might have read, if not now, somewhere before, what Ikigai means and where it has come from and what does it mean. So I'll not put much of the efforts on what it is, but a simple definition I will give you. It has got two words in what Japanese says. It says that Iki, I-K-I, and the second word is Gai, G-A-I. Now, Iki means, I'll not share this, okay? I'll share it later. When I say Iki, I-K-I, okay, when I say Iki, it means life, and Gai is purpose. Now, let us understand what life is. What is definition of life? If I ask you what is the definition of life, few people will say that happiness, few people may say suffering as they experience, but in journal there is no such definition of life. Is it is about your experience, how you go through. A simple shortest derived definition which generally used is life starts with your birth and ends at your death. So it starts from B and ends at D. Okay, birth it starts and death it finishes. Now if you see, in between B and D there is a word called C. Now Allah subhanahu wa ta'ala has given us a choice, to make this life better or to make this life hell. So what life is, it starts with B and ends with D, and it be in between these two, the word C, Allah subhanahu wa ta'ala has given us a choice. Now,
This choice has not been given to any species in the world, or I would say in the universe, the complete universe. Now if you see um, a donkey 1,000 years before, he's the same donkey as it is today. If you see the camel, it is same. If you see a dog, it is the same. Okay, every species in this world is the same. It is only the human being Allah subhanahu wa ta'ala has given us a choice to make us this life a better or make it us different. Now Allah subhanahu wa ta'ala says that we have made, okay, the best among all creation is human being. um, among all the creations he has made, okay, the best is human being. He says that in surah لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. We have made a human being the best among all creation. Now, with our choices, what we do is asfala safilin. Now, ahsanu khaliqin is what Allah subhanahu wa ta'ala has made us. Now, what with our choice, with our acts, with our deeds, we made it as asfala safilin. So, life is between birth and death, and choice is what is been given to you. That is what iki means in Japanese, the life. Now the second word that comes is gai, that means a purpose. Now you see everything in this world, or everything that you keep in your home has a purpose. Without purpose you do not keep anything. If there is the purpose is fulfilled, you put it in a garbage, you put it in a dustbin. Now life too has, it should have some purpose. Now what is that purpose? Finding that purpose is what gai is, okay, in Japanese term. Now, Mark Twain, a great American scholar, he said that there are two important days in your life. I repeat, there are two important days in your life. The day which you born, on the day on which you born, okay, and the second one is the day you find out why you are born. ठीक है, अमेरिकन स्कॉलर मार्क ने कहा कि दो जिंदगी, इंसान की जिंदगी में दो इंपॉर्टेंट दिन है। एक वो कब, जिस दिन वो पैदा हुआ, और दूसरे दूसरे दिन वो है जब उसको पता लगा कि उसने क्यों पैदा किया। नाउ if you analyze this word guy in Islamic perspective, Allah subhanahu wa ta'ala clearly says that we have made men and human being or jinn, okay, just for his ibadah. There is nothing else. It has been clearly written, it has been clearly described in our holy Quran that we have made human being just for his worship. Now we have a clear defined purpose. Now life iki is, which starts with b and d, okay, and the choice Allah subhanahu wa ta'ala has given to us, okay, with that choice we can become ahsanu khaliqin, or or asfal safilin. Okay, we can become better or we can become the worst. That is the choice, that is life. And purpose is been clearly defined that Allah subhanahu wa ta'ala has made us for his ibadah. These are the two different things. Now if you go to the Japanese term, okay, they say, I would not say the same, but they say are somewhat similar to what it is being said. Okay, I will share you the screen, and then you will come to know what we are talking about. Okay, now here it is in the screen. It says that it is the purpose of life, a motivation for something or someone has given a person's a sense of reason for the life. Now as I said, okay, for everything that you keep in your home or in your life, okay, it has to have a purpose. Now iki is life and gai is value, worth, purpose,
you can name it anything. Now, these ikigai, the word come from a Japanese village called Okihama. Now, how it has come, a brief definition, you might have already read it. In this village, in this small place, people live more than 100 years. Now, two Spanish writer went there and found out what is the reason that these people live a longer life. Furthermore, if you say there are five blue zones, Okihama is one of the blue zones. There are five blue zones in this world. Okay, one is in Greece, one is in Costa Rica. Okay, so on and so forth. So in Japan, there is one called Okihama. Now, in Okihama, the life expectancy in Japan, I would say the complete life expectancy is more. And in Japan, Okihama has got more than 100 years life expectancy. So these two authors, they went there and searched why they are living a longer life. And they found out that they practice this principle called Ikigai. Okay, life living with a purpose. Now, in Islam, it has been clearly said that we have been created for a purpose. Now, their purpose and our purpose, how it is being related, that is what we are going to see. Now, if you see the screen, it says that it has been defined in four different ways. Okay, four, I would say, steps or four criteria or four stages, whatever you want to say. ये चार स्टेजों में बना हुआ है. सबसे पहले, if you want to know the ikigai of your life, okay, the purpose of your life, you must find out that what you love. ओके, जिंदगी में आप कौन सी ऐसी चीज है जिसे बहुत ज्यादा चाहते हैं, चाहे वो काम हो, ठीक है, चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, पैशन, वो हम वी विल लर्न दिस अबाउट मोर डिटेल. द फर्स्ट स्टेज इज व्हाट you love it. Okay, and the second one is what you are good at. For example, I may say that I love playing cricket. Okay, that is the sport which I love it. But the second thing what ikigai says is that if you love it, that is good, but are you good at it? That is what you have to define. So if you are good at it, okay, then you must see that whether the world needs more cricketer or not. As of now, okay, where do you stand on a scale of 1 to 10, whether the world needs more cricketer or not? After the world needs more cricketer, then you must see whether you can be paid for that or not. Okay, these are the four basic principles of ikigai. आप क्या चाहते हैं, क्या आप उसमें अच्छे हैं, क्या दुनिया को इसकी जरूरत है, और क्या इसके लिए आपको पैसे मिलेंगे. Now, if you see the four things in ikigai, okay, it is not, I would say, directly related to what Islam says. Okay, it is not directly related. However, while studying, while researching, I find it out that Bukhari Sharif ki pehli hadith, the first hadith in Bukhari, it says that innamal amalu bin niyat. हर हर काम का दारोमदार नीयत पे है. अगर आपकी नीयत उस काम के लिए खालिस है और अल्लाह को राजी करने के लिए है, तो फिर वो सवाब है, अच्छी चीज है. जैसा कि our purpose of being here is to do ibadah. Now, how we can do ibadah? Whatever you do in your life every day since morning till evening, if you do it keeping in an eye that Allah is watching me, keeping integrity in your mind, keeping that this will give me an ajr, that is sawab. That is the purpose. That is the basic standard purpose of our life. So now, what you are good at is the first and foremost, what you love is the first and foremost thing. Now, in Islam, I would say, okay, in Islamic perspective, we have been given a choice, as I said in the beginning. Now,
चॉइस देने के बाद अल्लाह सुब्हाना तआला ने अल्लाह ही हैज गिवन अस अ बाउंड्री, ओके, एक दायरा महदूद कर दिया है। इसमें आपको जो मर्जी पसंद है आप कीजिए, ठीक है। यू डू व्हाट यू लव, बट but in a boundary, okay. The same ikigai also does it, okay. If someone says that I love to do you know murder, okay, or I love to do criminal activity, when at that point of time the Japanese philosophy also says that that is not good. If you read the complete book, okay, it has got 10 11 chapters. Now in I cannot go in with all those chapters, but with this basic thing, what they say is, okay, हर वो चीज जो आपको पसंद है वो कीजिए, provided, okay, in inverted commas, provided it should not be harmful to anyone else or you yourself. अब अगर कोई ये बोले कि जो है ना मुझे हाथ काटना बार बार अच्छा लगता है, I love it, but that is not been recommended. So what you love it, okay, do it, okay, provided it has a boundary. इकिगाई में भी बाउंड्री है और इस्लाम में भी बाउंड्री है। हर वो काम जो आपको अच्छा लगे करिए, बट बुरा या बुरा आपके साथ ना हो और बुरा किसी और के साथ ना हो, because the choice is been given to you. Now second important thing which is being said is what you are good at. जो काम में आप माहिर है, अच्छे है, बेहतर है, आप कीजिए, ठीक है। अब अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए एक छोटी सी हदीस है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में थे, वहां पर आपने देखा कि कुछ लोग यू नो डेट ट्री, जो खजूर का झाड़ है, उसके ऊपर चढ़े हैं और कुछ कर रहे हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा, देख के कहा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्रॉस पॉलिनेशन, इफ यू नो इट, ओके, मेल एंड फीमेल को जो है ना दोनों को मिला के यानी प्लांटिंग करते हैं। तो दे सेड दैट दे आर डूइंग क्रॉस पॉलिनेशन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये ठीक है। ही जस्ट सेड दिस, ओके, एंड ही वेंट, ओके। एक और हदीस में रावी ये भी लिखते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खजूर आए, उन्होंने खजूर खाया और देखा कि ये बेहतरीन खजूर है। उन्होंने कहा कि ये खजूर कहाँ, कैसे, कौन सी झाड़ का है, कैसे आया है, कहाँ से आया है खजूर। तो वहां पे जो सहाबी थे उन्होंने कहा कि हम क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं और उसकी उपज, उसकी उसका रिजल्ट ये है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे नहीं लगता ये ठीक है। नेक्स्ट ईयर वो खजूर की जो मकदार थी, जो प्रोडक्शन था, दैट वाज रिड्यूस्ड। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि लास्ट ईयर जो मुझे खजूर दिया था वो खजूर नहीं है, या खजूर की प्रोडक्शन कम हो गई, क्यों ऐसे। तो सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने कहा कि वो मुझ आपको नहीं लगता वो ठीक है, इसीलिए हमने नहीं किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आस्क मी एनीथिंग विच इज रिलेटेड to deen, and if I say anything in terms of deen, stop it. If I say anything to do it, do it, but anything in the worldly matters, you know much more better than me. तो कोई चीज अगर दुनिया की भी में अगर कोई काम अच्छा है जो कर सकते हैं, जिससे फायदा हो, जो अपने को फायदा हो, जिससे दुनिया को फायदा हो, जिसमें आप महारत हासिल करते रखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जस्ट डू इट। सो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट यू आर गुड एट, प्लीज डू इट। इस्लाम ऑल्सो सेज दैट प्लीज डू इट व्हाट यू आर गुड एट, जैसा कि मैंने बताया। तीसरी चीज, डू द वर्ल्ड नीड्स इट। आज के टाइम पे अगर मैं कहूं तो ये सबसे बड़ा सवाल है, ठीक है। एक्चुअल में देखा गया तो इकिगाई, मैं समझता हूं कि व्हेन आई फिनिश्ड माय कॉलेज आफ्टरवर्ड्स आई रेड इट। आई डोंट नो व्हेन यू हैव रेड इट, okay, but I strongly recommend that this ikigai model should be taught in the school to the kids, okay. If you have a kid younger than teens or at least in teens, okay, please show them this model and ask them to write, okay, what these four things, okay, what you love, what you're good at, okay, what, whether the world needs it, and the last one is whether the world is going to pay it. Now
इन करंट सिनेरियो, आज के टाइम पे लोगों को देखेंगे स्ट्रेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिड लाइफ क्राइसिस, और खास तौर से पेरेंट्स को देखें, ठीक है, वंस दे फिनिश देयर प्रोफेशनल जर्नी, नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट their kids journey. Now if you ask for the kids journey, okay, they are much more worried, okay, about their future. Now in this fourth thing, you should see to your kids what the world needs it. Future is AI, future is ML, future is data, future is robotics. What your kid is studying right now, is it compatible or not? We are living and at the same time we are extending ourselves in a VUCA world. I know, I think you know it. VUCA, volatile, uncertain, complex, and ambiguous. Okay, we are living in this world where things, technology, is changing on a flick of a second. Previously, it took a lot of time. Now we are living in a VUCA world. So make sure whatever your kid study should see that future, the world needs it. Now more gone are the days when where people used to say that slow and steady wins the race. Now we are in a world where quick and accurate wins the race. So the third category where it comes is what the world needs it, or whether the world needs it or not. Whatever profession you are in right now, whatever activities, whatever, how busy you are, whatever you're doing, make sure that whether the world is in future requiring or not. As you have seen, I have done a webinar also. Artificial intelligence is going to change the whole world. Okay, so going forward, whether the world needs it or not, you have to define your purpose of a life it. Okay, and the last one is whether the world. Now if I say that this third category, the Islamic perspective, okay, whatever the world today needs two things, I would say. Okay, this is my perspective. I may be wrong. The first is money, and the second one is education. Okay, these two things are the most required things, the area in the life going forward. Now I won't say these are the only thing, but these can be the major. How you can make money by any means of halal. Okay, that is what you have to taught your kids, because that future is going to be very capitalistic, and you have to teach your kids. Now in Quran also, Allah subhanahu wa ta'ala says that after Jummah, tomorrow is Jummah. Okay, after Jummah, fantashiru. Okay, go out, spread after the Jummah prayer. Go out, spread, and look what is required, what is needed, and find Allah's blessing in the market. Okay, in the open, in the place where the world needs it. So tomorrow after prayer, जुमा की नमाज के बाद बाहर जाओ, काम करो. This is what the world needs, its ikigai model. Now the fourth one is whether the world is going to be paid or not. Now there are many things, okay, which people do for voluntary. Okay, that is good, that is fine. Okay, that is a part-time thing what you can do. But in real, okay, you must have something monetary in order to survive. Now if you do not get that, okay, then the problem arises. In the next slide I will explain you more, okay, how the things are going to change if you do not have, whether the world whether you'll get monetary benefits or not. So whatever you do, whether the world is going to be paid or not. Now in terms of paying, okay, the maximum hours you can work is 18. बहुत ज्यादा कह रहा हूं मैं, अगर कोई काम किया तो वो 18 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर सकता. अब if you want to have more money, okay, in ikigai model, now you cannot increase the hours.
24 घंटों से ज्यादा आप नहीं ला सकते। और साइंस आज ये प्रूफ कर दी कि मैक्सिमम अगर आप काम कर सकते हैं तो 18 घंटे, उससे ज्यादा आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी। एंड दैट टू फॉर ए लिमिटेड टाइम, एंड दैट टू इफ यू आर यंग। अगर आप 40 से अबव हो गए, ठीक है, तो फिर आप 12 घंटे 14 घंटे से ज्यादा काम नहीं कर पाओगे, फिर आपकी हेल्थ पे इफेक्ट होगी। सो यू कैन नॉट इंक्रीज द टाइम, बट इफ यू वांट टू गेट मोर पेड, you can increase the value. Okay, by increasing the value, you can definitely increase your money. This is what ikigai model says all about. If you want to get paid, okay, do not increase the working hours. लोग 8 घंटे काम किए, 2 घंटा और काम करूंगा ज्यादा पैसे मिलेंगे, 4 घंटा और काम करूंगा और ज्यादा पैसे मिलेंगे। वो मॉडल अभी चला गया है, ओवर टाइम बेसिस वाला मॉडल चला गया है। अभी गोइंग फॉरवर्ड व्हाट विल हैपन इज, okay, or what is going to happen is, you cannot increase the time, but you can increase the value. By increasing the value in yourself, you can increase the money which you can get it. For example, एक डॉक्टर है, नॉर्मल जनरल फिजिशियन है, वो 8 घंटे देखता है, 8 घंटे काम करता है, और पर पेशेंट लेट अस से 500 ही इज अर्निंग ऑन एन एवरेज। If he's looking after 50 patients, how much is he going to earn? 25,000. However, but if you are a surgeon, एक ही patient, maybe half an hour or 1 hour, you can earn that much amount. So what the world is, whether you are getting paid or not paid or highly paid, it is based upon the value you are creating yourself. So you have to create the value within you, okay, in order to have a better life. So this is what the ikigai model is. I will explain us a little bit more. Okay, and I hope this slide is very much clear. The Japanese model again. Okay, what you love. Okay, what you're good at, what the world needs it, and what you can, it can be paid off. Now, if you see among these four circles, there are semicircles. There are semicircles. Okay, look at the slide one more time. What you love is overlapping what you're good at. Now, in between what you love and what you are good at, there is a green circle which is called passion. ठीक है, आप कोई काम में अच्छे हैं और आपको वो काम पसंद है, दैट इज पैशन. नाउ in ikigai, the book, it says a state, when you are doing this, you are in a state of flow. यानी आप फ्लो कैसे कहते हैं कि आप यू आर आउट ऑफ दिस टाइम एंड वर्ल्ड. आप एक काम करते करते आप पैशन में इतने ज्यादा महू हो गए कि आपको टाइम नहीं पता चला, आप कैसे बैठे पता नहीं चला. अब कोई दूसरा अगर वो रूम में आएगा तो बोलेगा इतनी गर्मी में कैसे बैठे हो, ठीक है, बट यू डू नॉट नो दैट इट इज दैट मच हॉट. व्हाई? बिकॉज यू आर वेरी मच इन्वॉल्व इन दैट वर्क. ठीक है, आप कोई एक ऐसी चीज जो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर दे, दैट इज योर पैशन. कोई ऐसी चीज जिससे आप मुआवजे के पीछे ना भागे, यू आर नॉट लुकिंग फॉर द रिजल्ट, ओके, दैट इज योर पैशन. कोई ऐसी चीज जो आपको थका ना दे, that is your passion. So in ikigai it says that, okay, you must find your passion. The same goes with our Islamic perspective. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनके उनके चचा आए, लोगों ने कहा कि जो है ना, ये जो दीन इस्लाम वाला काम है, ठीक है, ये बिल्कुल छोड़ दो. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर मेरे सीधे हाथ में सूरज रखें और दाएं हाथ में मुझे चांद रखें, then also I will not leave this work. That is what passion is all about. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी वक्त तक उम्मती 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 करते. That is passion. ओके, वो काम आपको जो थका ना दे, जो आपको टाइम एंड स्पेस से आउट कर दे, दैट इज पैशन. एंड इस्लाम टीचेस अस व्हाट एवर यू डू विथ पैशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिजल्ट.
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 13 साल जिंदगी, चंद सहाबी, बट हिज पैशन was never down. So what you are good at overlapping, okay, what you love is passion. Now if you go to the second step, what you are good at and what you can be paid for is your profession. आप कोई काम में अच्छे हैं और उसमें आपको पैसे भी मिल रहे हैं, that becomes your profession. Now what usually happens is, ये पहले जो होता था, आज के टाइम पे वो का वर्ल्ड है, पहले होता था कि लोग एक एक जॉब ज्वाइन किए और 10 साल, 15 साल, 20 साल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, ओके, दे स्टार्टेड वर्किंग एंड दे रिटायर्ड, ओके। नाउ, ओके, हमको क्या है, अटेंशन डिविएशन सिंड्रोम है, हम वी गेट बोर्ड वेरी ऑफन, वेरी फास्ट, इवन दो यू आर गुड एट इट, okay, even though you are getting paid for it, but you feel some sort of emptiness. यार नहीं भाई, वही काम करते करते थक गया, बोर हो गया, आई वांट टू हैव सम चेंज, आई वांट टू हैव अ डिफरेंट लाइफ, वो स्टैटिक हो गई, ठीक है, दैट स्टॉपिंग यू फ्रॉम ग्रोइंग. Now, that is your profession. And in your profession, you must see how better you can be in order to fulfill your purpose of life. सुबह उठे, जॉब पर गए, सुबह उठे, बिजनेस किया, घर आ गए, और बस इतनी तनख्वाह मिल गई, इतनी इतनी पैसे मिल गए जिससे आप आपकी लाइफ सेटिस्फाइंग है, दैट इज गुड. बट इज दैट इट अ पर्पस ऑफ लाइफ? आपका दुनिया में आना सिर्फ यही चीज है कि बस सुबह उठूं, काम पर जाऊं, पैसे कमाऊं, घर आऊं, यही काम है? नहीं, दिस इज नॉट इट इज. सो यू हैव टू सी दैट दिस इज जस्ट अ प्रोफेशन विच इज फुलफिलिंग अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. ओके, जो 8 घंटे अगर हम यूजुअली करते हैं, 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, और 8 घंटे जो है ना सोशल एनजीओ वगैरह के साथ जो काम करते हैं, ठीक है, दैट 8 hours दैट यू गिव इट टू योर सेल्फ, ओके, दैट इज द 3 breaks. ओके, profession is one of the break. Okay, so what you're good at and what you're getting paid for is profession. Now again, go back to the top, what you love, okay, and what the world needs. If you combine these two things, okay, that becomes mission. For example, अभी मैं जो है ना अच्छा हूं, मैं कोई एक काम में अच्छा हूं और दुनिया को उसकी चीज की जरूरत भी है, जैसा वॉलंटरी वर्क है, आई एम वेरी गुड एट वॉलंटरी वर्क्स, ओके, बट एंड द वर्ल्ड नीड्स इट, मगर पैसा ना हो तो फिर जिंदगी चलना भी मुश्किल है. जैसा मैं अक्सर कहता हूं, एंड आई एम स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस, ओके, money is not everything, but maximum number of problems can be solved by money. So money is needed, required. So your mission is, if it is not being paid for, okay, that becomes a problem in your life. सुबह उठे, सिर्फ एनजीओ का काम किए या ऐसा काम किए जिससे आपको पैसे नहीं मिल रहे, then sooner or later you will have a problem. And the last one is, what the world needs it and what you get paid for is vocation. For example, लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं आजकल, ठीक है, ट्रैवल ब्लॉगिंग, ईटिंग ब्लॉगिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, द वर्ल्ड नीड्स इट, okay, and you are being paid for, okay, and then you are having a very nice vacation. तो ये काम अगर आप करेंगे थोड़ा टाइम के लिए, फिर ठीक है, देन अगेन समथिंग अनसर्टिनिटी आएगी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. टाइम इज रनिंग अप, माय मॉडरेटर इज बीइंग alarming me, that I have to finish it up. And if you see one block which is covering all these things is ikigai, the meaning and purpose of life. So what you have it is passion, profession, then mission and vocation. All these 4 things, if you combine, that becomes your ikigai. Now how Islam teaches us what about all these things. पैशन का मैंने बोल दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतरीन पैशनेट पर्सन फॉर द कंप्लीट उम्मा. ऑल ही वाज थिंकिंग, ऑल ही वाज डूइंग इज दैट, यू नो, कोई भी दोजख में नहीं जाना चाहिए. This is what his main purpose of life is. Now, in terms of profession, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ने हमेशा
हमेशा ये कहा है कि वॉट एवर यू डू यू बी द बेस्ट इन इट। एक बेहतरीन हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हलाक है वो शख्स जिसका आज का दिन कल से बेहतर ना हो। तो ही ऑलवेज इंकरेज प्रोफेशन। और दूसरी चीज, सहाबा से भी हमको यही देखने पे मिलता है। उस्मान बिन अफ़्फ़ान रजी अल्लाह ताला जब मक्का से मदीना गए, ठीक है, किसी ने कहा कि मुझे आधे बाग ले लो, आधा पैसे ले लो, एक्सेट्रा। ही सेड नो, गिव मी एन एक्स, okay, and tell me where the market is. He took that axe, went to the jungle, break the trees and sell it. And आपको पता है कि जो है ना, प्रोफेशनली हाउ रिच ही वॉज। कई सारे, कई टाइम पे जहां पे द कंट्रीब्यूशन वाज नीडेड फॉर मनी, ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टैंड। So profession, whatever you do, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that, okay, do it with integrity, saying that every time Allah subhanahu wa ta'ala is watching you, be the good in what you do. That is what a profession is. Okay, now mission, if you say, okay, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं मुहिम्मात का नबी हूँ। ओके, ही नेवर वन एक्सपेडिशन, वन आफ्टर द अदर, वन मिशन आफ्टर द अदर। Okay, he never had a weekend. Okay, he never took a break. He never said that, okay, it is Friday, let us do it half day, etc., etc. His mission was a dot on 24/7. All the time he was saying that, okay, work, work, work. ठीक है, ये दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी जिंदगी में एक मिशन होना चाहिए, जिस पर आप ये कहेंगे, अच्छा सुबह उठूं तो मेरे पास ये करने के लिए ये है, दिस इज व्हाट आई एम लिविंग फॉर, दिस इज व्हाट आई हैव वर्कड अप फॉर, सेइंग थैंक्स अल्लाह, एंड देन दिस इज व्हाट इट इज देयर इन माय लाइफ, द मिशन which is very important. And the last one is vocation, what the world needs and what is being paid off। आज के टाइम पर दुनिया को, आप हमारे जैसे आई वुड से learned, knowledgeable people is needed, those who can say what is good and call people on that, okay, and stop people from what is bad। You are seeing the world, I do not have to explain what we have been going through, okay, the wars, okay, the natural calamities, etc., etc. So what the world needs and what you are being getting paid for, make sure this is the place where you have to focus 100% towards your kid। ओके, जो आप पढ़ चुके, ठीक है, वही चीज पढ़ाना, ठीक है, और फ्यूचर एकदम इंटायरली डिफरेंट होना, it's absolutely a different today, blended learning, customized learning, okay, and selective learning, homeschooling, there are a lot of things that world is required, needed, and the world is going to be paid in future for this as well. In fact, it is being paid right now, but in future also. So make sure that you should see what the world needs in future, okay, and whether it is being paid or not, and that becomes your vocation। बहुत ही आसानी से जिंदगी चले जाएगी। अब बेहतर क्या हो कि हर चीज में थोड़ा थोड़ा अगर आप करेंगे, दैट बिकम्स योर इकिगाई। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली, इस बुक में बहुत सारे कॉन्सेप्ट बताए गए हैं। लोगोथेरेपी इज वन ऑफ द कॉन्सेप्ट वेर इन इट सेज दैट आपकी जो है ना जिंदगी में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, इफ यू नो व्हाट यू आर हियर फॉर, ओके, ये तमाम दूसरे सारे टेंशनें जो हैं, छोटी छोटी चीजें जो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी आजकल आजकल बहुत ज्यादा है, ठीक है, ये सारी चीजें चली जाएंगी आपकी जिंदगी से। लोगोथेरेपी, इफ यू कैन गो ऑन द इंटरनेट, यू कैन लुक फॉर मोर थिंग्स, ओके। ये विक्टर फ्रैंकलिन की एक बुक भी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, please read this, okay, this is very good book, okay। holocaust, jewish holocaust जो हुआ था, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में वो that is much more relevant, I do not want to go into that topic। हिटलर ने जो जीविस जीव्स का के साथ किया था,
तो वहां पे विक्टर फ्रैंकलिन ने वो चेम्बर्स में रहा है और उसने ये बुक लिखी है, मैन सर्च फॉर मीनिंग, रीड दिस बुक, that is more or less similar to what ikigai is. Ikigai is more clearly defined and it is more easy to explainable man search for meaning. So logotherapy is one of the concept which Viktor Frankl has explained it very well. Okay, and at the same time इकिगाई डाइट, ये लोग क्या ऐसे चीजें करते हैं जिससे इनकी उम्र काफी लंबी होती है। ये लोग खाते अच्छा हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्गेनिक खाते हैं। आज के हमारे टाइम में हम वी ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग एंड एवरी टाइम। ये लोग की अगर आप बुक पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि दे हैव स्पेसिफिक टाइम टू ईट। बिफोर दैट दे डू नॉट ईट, आफ्टर दैट दे डू नॉट ईट। मगर हमारे पास कैसा है कि बस चलते फिरते हर हर थोड़ा टाइम के बाद खाना ही खाना है। सो डाइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एंड द वन थिंग which I usually do, okay, and I'm very strong in it, okay, you do it the same, in order to have a healthy and long life, is a small portion जो भी खा रहे हो, ठीक है, there is no bad thing, eat but small portion। वही चीज को आप 2 बार खाओ। लोग शायद बोलेंगे अरे यार कितना खाता है, डजेंट मैटर, बट डू नॉट ईट 100%। हदीस, इट इज बीन क्लियरली अगेन, ये सारी इकिगाई का जितने कॉन्सेप्ट है ना, इट इज बीन क्लियरली एक्सप्लेन इन आवर रिलीजन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आधा पेट खाओ, आधा पेट खाली रख, आधा उसमें थोड़ा सा पानी के लिए जगह रखो, डू नॉट ईट फुल स्टमक, इट इज बिन क्लियरली मेंशन। सो इकिगाई, ये लोग क्या कहते हैं कि ईट, ये मोर इम्पोर्टेंटली ये बुक में लिखा है, फूड इज नॉट द बेसिक प्रायोरिटी फॉर देम, नो नेवर, दे ईट टू सर्वाइव। और आज का हमारा खाने के लिए जीते हैं। मंदी के बाद बिरयानी, बिरयानी के बाद कुनाफा, कुनाफा के बाद चाय, चाय के बाद फिर पान, फिर पान के बाद भी अगर कुछ कोई आइसक्रीम अगर दे दें तो बोलेंगे कि यार ठीक है चले खा लेंगे। तो इकिगाई डाइट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी लॉन्गर लाइफ। ओके, एंड देन देयर इज अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड इकिगाई फिजिक। ओके, ये लोग एक्सरसाइज पे नहीं, ये लोग बिकॉज इट इज इन ट्रेडिशनल विलेज, सो दे डू मोस्ट ऑफ द वर्क, वहां पे ट्रेन नहीं है, ठीक है। ये ओकीहामा जो जो विलेज है, इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल विलेज, आई हैवंट बीन देयर बट आई हैव रेड मोर अबाउट इट। यहाँ पे जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी हुआ था, ये लोग ब्रिटिशर्स और अमेरिकन वगैरह वगैरह लोग सब आए, इनके हथियार वगैरह ले लिए, और ये लोगों ने ही कराटे जो है ना, वो यहीं से निकला है। वन ऑफ द प्लेस, कराटे मीन्स बॉडी डिफेंस, बॉडी से फाइट करना विदाउट हैविंग एनी वेपन। सो ओकीहामा में ये क्योंकि कराटे निकला है, तो दे आर मोर फिजिकली फिट बिकॉज दे मोस्ट ऑफ द थिंग्स, यहाँ पे ट्रैम नहीं है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे डू इट फिजिकली। नाउ हमारे पास, मैं आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि हेल्थ इज फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जितने लोग मुझे देख रहे हैं और जितने लोग मुझे देखेंगे, ठीक है, हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है, प्लीज, विनती है, रिक्वेस्ट है, अगर मैं बड़ा हूं तो ऑर्डर है, प्लीज ज्वाइन अ जिम, डू सम फिजिकल एक्टिविटी, स्वेट आना चाहिए, ठीक है। स्वेट से डोपामिन, डोज जो केमिकल्स है वो रिलीज होते हैं, दैट इज गुड फॉर यू, दैट हेल्प्स यू इन अ लॉन्गर लाइफ। आज के टाइम पर इतनी ज्यादा बीमारियां हैं। द अदर डे आई वेंट टू एन आई हॉस्पिटल, ठीक है, जहां पे मैंने देखा है, मेरी माँ के लिए गया था, जहां पे मैंने देखा कि यार इतने ज्यादा इश्यूज आई से रिलेटेड, आई वॉज shocked, and most importantly I spoke to the doctor as well, most importantly बच्चे, यानी alhamdulillah I'm plus 40 but still I do not use just reading class I use, okay। Now the doctor is saying ये जो तुम रीडिंग क्लास यूज कर रहे हो, फॉरगेट अबाउट द रीडिंग क्लास, द स्मॉल किड्स हैव अ लार्ज नंबर, बड़े बड़े नंबर की क्लास है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द मोबाइल। सो ये फिजिक इकिगाई यू मस्ट हैव इट, क्योंकि अगर आप हेल्दी रहेंगे, आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, आपके बच्चे भी देखेंगे, वो लोग भी एक्सरसाइज करेंगे एंड दे कैन बी बेटर एज वेल। सो हेल्थ इकिगाई, सो व्हाट आई सेड इज फूड,
ओके, फिजिक, कुछ फिजिकली करना चाहिए। अगेन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कमजोर मुसलमान से ताकतवर मुसलमान बहुत बेहतर है। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहतरीन हदीस, अम्मा आयशा से आपने एक बार दौड़ लगाई, अम्मा आयशा जीत गई, सॉरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गई। तो फिर उसके बाद कुछ टाइम गुजरा, फिर से मौका मिला, अम्मा आयशा ने कहा कि चलिए दौड़ लगाते हैं, उस वक्त अम्मा आयशा जीती। बेहतरीन हदीस, आप जाके पढ़े, यू विल एंजॉय दिस मोर। ओके, वहां पे जो है ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, कि ये उस बात का जो है ना इक्वल है। तो हेल्थ इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ओके, एंड दे से दैट स्पिरिचुअली इकिगाई, ओके, व्हाट वी डू इन दिस करंट वोका वर्ल्ड, फास्ट वोक वर्ल्ड, ओके, सुबह से शाम तक काम करेंगे, इतना काम करेंगे, और फिर उसके बाद जो है ना हमारी स्पिरिचुअलिटी नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि 100 बार इस्तगफार करो, 100 बार जो है ना शुक्र अदा करो, वी आर फार मोर बेटर देन पीपल। मैंने अभी आंख वाला जो वाकया बताया, मैं देखकर मुझे लगा कि यार कितनी बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमको दी है, जिनके जिनकी आंख बेहतर है, सलामत है, और विदाउट हैविंग एनी स्पेक्स दे कैन रीड, दे कैन वॉक, दे कैन डू मेनी थिंग्स। ओके, दे आर दी ब्लेस पीपल। सो logotherapy, physical ikigai, etc., there are a lot of many things which is being said, written in this book, and it is absolutely, complementary to what Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said. ठीक है, जितने ज्यादा उन्होंने ये बात कही है, इट इज एब्सोल्युटली रिलेटेड। यू शुड हैव अ क्लियर इंटेंशन, यू शुड हैव सोलफुल पर्पसफुल लाइफ। ठीक है, थोड़ा टाइम अपने लिए निकालें ताकि यू कैन बी मोर स्पिरिचुअल। दैट इज द वन थिंग विच कम्स इन योर लाइफ। ये इकिगाई ओकिहामा में ये लोग अपनी बच्चों के लिए बहुत ज्यादा फोकस्ड है। ये लोग बहुत ज्यादा, इन लोग को टाइम चेक इज व्हाट बीन said. Okay, it's I'll just share the screen again. I can understand the time is running up. I was also in a flow of Ikigai. ये बहुत अच्छी book है. It is absolutely related to what um, our Islam says. It absolutely related to what Prophet Sallallahu says. I strongly recommend to you to read it. Okay, next week we will continue the same session, but in the next week we will do exercises. What I have said right now is just a theoretical part and how it is related to our Islamic values. Okay, next week we will do the practical things. Okay, you should get a pen and paper. We will sit and we will see, write down a list of what you do. Okay, and how you can come up with few things. क्या होता कि ये जितने सारे वेबिनार्स वगैरह है, और हमारा क्लाइनविन का कॉन्सेप्ट ही ये है, वी आर स्लोली एंड स्टेडीली बिल्डिंग इट अप। हम सिर्फ ये जुमा का खुतबा वाला नहीं है कि हम मैं आया और ठहरा और बोला और चला गया, और फिर आप सबने कहा कि वेरी गुड सेशन, और फिर नेक्स्ट वीक आया नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट। हम क्या करेंगे, ठीक है, वी विल आस्क यू टू ब्रिंग पेन एंड पेपर फ्रॉम नेक्स्ट टाइम, ओके, एंड सिट एंड डू इट देन एंड देयर। फिर नहीं तो क्या होता कि द मोमेंट यू से दैट ओके वी विल डू इट लेटर, ओके, देन इट गोस इन अ प्रोक्रेस्टिनेशन, it goes in procrastination. So next episode sorry, we will have a complete exercise of ikigai. We will sit and practically do. With this I would like to end the session, but before ending, any questions on the chat box quickly, on ikigai? One or two questions, we will take it on the chat box. Any questions? What ikigai is, and Islamic perspective of ikigai? One or two questions, we will take it. What ikigai is, और जितना मैंने आज समझाया है उसमें अगर कुछ सवाल है तो प्लीज लेट मी नो। अस्सलाम वालेकुम।
Four stages, as I said, okay, which has been important. अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। Is anybody saying anything? अस्सलाम वालेकुम। हाँ ओके, वालेकुम टू सलाम, बोलिए स्पैनिश आप। ऑथर्स है, आप जस्ट इकिगाई बुक करके बोलेंगे आप, अलीम भाई प्लीज। ओके, टू स्पैनिश ऑथर है, अग्रासिया समथिंग, इट इज वेरी हार्ड फॉर मी टू रिमेम्बर द नेम, बट स्पैनिश ऑथर्स है, दो लोगों ने मिलके लिखी है ये बुक। एंड इफ यू गो ऑन द इंटरनेट यू कैन इजीली फाइंड इट आउट। एक्चुअल में अगर मैं इसके और डीप में जाऊं तो एक स्मॉल आर्टिकल छपा था जापानीज मैगजीन में इकिगाई ओकिहामा के बारे में। ये दो ऑथर्स ने इन्हें स्पेन में पढ़ा, और ये दो ऑथर्स ट्रैवल्ड टू ओकिहामा, and this did the survey, did the interview, etc., and they went back to Spain and written the original ikigai book in Spanish language, and then later on it has been translated to different languages. If you go on the internet, just put ikigai, okay, it is very well searched name, you will easily get. It is the hard for me to gracias, something is the name of the author. If you just give me a minute, I think it is Hector Gracia and Francis Millares, if I've been pronounced well, with all due respect to their names. Hector Gracia, okay, and Francis Millares, if I have pronounced it well. Any other questions? In the meantime, while you do not have any questions, please review us, put some comments on the Google, on and subscribe to our channel. If you have got any questions, we'll take it. Okay, are you going to organize similar book sessions for another books? Yes, we do. Yes, we do. Every Thursday, we will do it every Thursday, 8:30 p.m. Okay, we will do it book session review. And especially in terms of Islamic perspective, whether it is been related, what is being said, and how we can implement the most important thing which we are going because this is the first session. I just wanted to explain those who do not know. ये पहला सेशन था, फर्स्ट एडिशन था ऑफ दिस सेशन, इसीलिए जस्ट एक ब्रीफ दिया हूं. नेक्स्ट सेशन इट वुड बी कंप्लीटली प्रैक्टिकल. You have to come with pen and paper. Okay, similar text content available online. I didn't get you. Similar text content, that means you're talking about Islamic perspective or क्या है? Islamic perspective, I don't think उतना ज्यादा है on this book. मैं थोड़ा बहुत देखा था बहुत पहले. आई थिंक इट इज नॉट बीन अवेलेबल because see, these sort of books and these sort of things, कहीं ना कहीं हमारे इस्लामिक scholars, I think they missed to do it. अगर मैं जेनजी की बात करूं, जो जो न्यू जनरेशन या अल्फा जनरेशन जिनकी बात करूं, ठीक है, अभी ये लोग को ये जो टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, हम these are the more fascinating terminologies, they which they find it more curiosity. Okay, अगर इसको हम इस्लामिक पर्सपेक्टिव में नहीं समझाए, then our kids may go somewhere else. Okay, so we as an clan been thought of जो लेटेस्ट ट्रेंडिंग, इससे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बात की थी,
ठीक है, अब जो है ना इकिगाई पे बात कर रहे हैं, हम स्ट्रेस बर्नआउट पे बात किए हैं। अब आगे चल के हम एडिक्शन पे बात करेंगे। बहुत सारे एडिक्शन हैं, लोग छुपाते हैं, शर्माते हैं, बट pornographic addiction is one of the thing. Okay, drug addiction is one of the thing. Mobile screen addiction is one of the thing. How to get rid of addiction, प्रैक्टिकल स्टेप्स हम करवाएंगे। ठीक है, हमने एक सेशन किया बर्नआउट पर। ठीक है, लोग बोलते नहीं हैं, बट द रियल प्रॉब्लम of today's world is, okay, people are going from stress, people are going from you know एंजाइटी, बर्नआउट। कहते नहीं हैं, फिर एकदम उसके बाद वो क्या होता, मैं बताता हूँ आपको कि द स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये जो है ना, ये डायरेक्टली माइंड पे नहीं काम करता, किसी की किडनी पे काम करता है, किसी की हार्ट पे काम करता है, किसी के ब्लड प्रेशर पे काम करता है। ठीक है, कोई पैरालिसिस होता, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं को जो बॉडी में वीक पार्ट है उस पर अटैक करता है। सो वी मे थिंक, अरे यार उनकी किडनी ठीक नहीं है, या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, पेट का, लीवर का प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें बोलते हैं, बट दैट इज द मेन कॉज इज स्ट्रेस। सो वी डिड अ सेशन ऑन स्ट्रेस एज वेल, so we may continue to do it. Okay, and with this I would like to end this session. Jazakallah khairan wa ahsanu jaza. Thanks for coming, thanks for attending. Please share with your friends, family and relatives. We'll see you next Thursday inshallah at the same time,